These are the topics to be covered under the heading of the shaft. In the coupling, we will be discussing about the muff and flange coupling in detail. So this has the topics. So unit is divided in two parts, part 1 and part 2, couplings and the shaft. What does it mean by shaft design? So the topics under considerations will be material selection, geometric layout, strength and stress and strength under static and fatigue conditions, then deflection and rigidity, bending, deflection, torsion, twisting, slope at the bearing shaft, supported member, elements, shear deflection due to transverse loading. These are the situations for the deflection and rigidity studies. Then vibration, that is critical speed. So consideration and determination of these parameters is nothing but known as the shaft design. So we will be discussing these topics in one way or other way. As far as vibration is concerned, that will be discussed in the dynamics of machine. Critical speed, this topic will be discussed in dynamics of machine. I think Professor As Mohammed is teaching dynamics of machine. So he will be covering the critical speed of the shaft. We will not cover here the critical speed of the shaft. So, introduction of the shaft. Shaft is one of the most common basic machine element which is used in a variety of ways in all kinds of mechanical equipment. See, very basic lines are written here. Please go through it. Shafts are one of the most common and basic machine element which is used in variety of ways in all kinds of mechanical equipment. Shafts are classified as plain transmission shaft, stepped shaft, spindle axle, or they are further as the line shaft, step shaft, counter shaft, flexible shafts. So as I told you that in the course 2 of the machine design, you will be studying a different machine element. Common machine element is the shaft. Gear is also a machine element. Bearing is also a machine element. Key is also a machine element. Spring is also a machine element. So shaft is assumed to be one of the very important machine element. And whenever you will talking about any machine, you will be getting the shaft will be there. You will be the shaft may be in any of the form. The different form of the shafts are there, different design of the shafts are there. So you can see these shafts. For example, the first figure, the line shaft is there. In the second figure, step shaft. This shaft is known as the step shaft. At one end, stepping is there.
Then the counter shaft. Counter shafts are shown here. And then the flexible shaft. You see, these type of the shafts are known as the flexible shafts. You would have been encountered these type of the shaft in day-to-day life somewhere in the machine, somewhere in the different places. This is a simple plain layout is given. For the plain transmission shaft, the general shaft, stepped shaft, stepping is shown. Machine tool spindle. Spindle is also a type of the shaft. Railway wagon axle. Then non-rotating truck axles and the crankshaft. These are the, depending upon the application, these elements are used in the different machines. So now, after this discussion, again you try to understand how we will define it. A shaft is a rotating member, usually circular cross section, may be solid or hollow, which transmits the power and rotational motion. A shaft is a rotational member, usually, not always, usually circular in cross section, may be solid or may be the hollow, which transmits the power and the rotational motion. The machine elements such as gears, pulley, flywheel, clutch, sprockets, I think you know these machine elements, are mounted on the shaft and are used to transmit the power from the driving device through a machine. These are the common machine elements which are generally mounted on the shaft. Gear, pulley, they are also known as the shaft mountings. Gear, pulley, flywheel, clutch, all these things. Press feet, keys, drill, pins, splines. These are the systems which are used to attach the machine element on the shaft. We will be discussing them in the later stages. Press fit you have already studied in the thick and thin cylinder in the second year. Press fit. You can heat one element and then with the help of the force you push it on the other. That is the press fit. Our key, dwell, pins, splines will be coming. Shaft rotates on the rolling contact bearing or the bush bearing. Ultimately, shaft will be resting somewhere. Where the shaft is going to rest, that will be the stationary part. So if you will directly going to put the shaft in that position, a lot of wear and tear will be there. So reduce the wear and tear, you will be using different type of the bearings. So we put the bearings at the end of the shaft where they are going to rest. Various type of the retaining rings, thrust bearing, grooves, steps. These are used in the shaft to take up the axial loads and locate the rotating elements. These retaining rings, thrust bearings or grooves, steps generally be provided on the shaft, and there is a reason to provide that they are helpful in assembly and disassembly, and with the help of them
it is easy to mount these mountings on their positions, or for location purpose they are good. Couplings we will be discussing in a separate lecture. Couplings are used to transmit the power from driving or the drive shaft to the driven shaft. ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट के बीच में अक्सर कपलिंग्स यूज की जाती हैं. वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द कपलिंग्स. You can see here the position of the coupling, position of the bearing and position of the shaft. Motor is there. ड्राइविंग मेंबर है मोटर, यहाँ पावर अवेलेबल है, तो और फिर शाफ्ट अवेलेबल है और फिर ड्रिवन मशीन है आपकी. सो फर्स्टली यू विल ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द मोटर टू द कपलिंग, then to the shaft, and then again you will be using the coupling and then again to the driven machine. However, you can see that shaft is resting on the bearings. So there are several advantages of the couplings. One of the major advantage, that suppose motor has stopped working and you want to send the motor for the repairing. So no need to send whole machine. You will dismantle it from the coupling position and you can send the motor for the repair, which is a common problem at the homes for in the centrifugal pump. When the pump is not working, when the motor is not working, you used to dismantle it. Or the driven member, whatsoever maybe the driven member is there, if it is not working, you can dismantle it with the help of the coupling. Even there, some other advantages are also there of using the different couplings. You can see the situation of the shaft, you can see the situation of the coupling, and you can understand why we are using the coupling with the shaft. Why coupling will be covered or taught in the unit of the shaft, because it is the integral part of the shaft. You can see the coupling is the integral part of the shaft. Please refer this diagram. A very important diagram. Shaft issues which are related to the shaft design. Shaft are one of the most commonly encountered machine component. Now here so before that, left side, right side. Left side, very first heading is the material. SE. SUT, SYT. These are the terminologies which are used in the design. Case K, Q, RC.
See, endurance stress. Strength corresponding to this is known as the endurance strength. SUT, ultimate stress. Strength corresponding to this is known as the ultimate strength. SYT, yield strength. Stress corresponding to this is known as the yield stress. कल आपसे जब हम बात कर रहे थे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की, तो ये सब बातें अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्लियर है तो जैसे ही हम SUT कहेंगे आपके दिमाग में फौरन पहुंच जाना चाहिए व्हाट इज। SYT अगर कहते हैं तो आपके दिमाग में माइंड में बात फौरन आ जानी चाहिए व्हाट इज SYT। ये सब पढ़ चुके हैं आप पहले। देन K, जनरली स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर्स होते हैं अलग अलग, उसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड Q इज द नॉच सेंसिटिविटी। Q इज द नॉच सेंसिटिविटी। ये सारे बेसिक पैरामीटर्स हैं डिजाइन के जो कि लास्ट ईयर आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। Can anyone tell me what is RC? Yes, can anyone let me know what is RC? इसको कई जगह आपने पढ़ा था इसलिए हमने पूछा था आपसे RC को। RC रिप्रेजेंट द हार्डनेस। RC Rockwell hardness. C stand for on scale C, RB, RC ये सब पढ़ चुके हैं आप। Rockwell hardness on B scale RB, Rockwell hardness on C scale RC. So these are the parameters or the issues which are related or which are important from the shaft design point of view. Then with reference to the environment, what is the operating temperature, what is the corrosion and environment, what is the magnetic environment. These are also the important parameters to be considered during the shaft design. Temperature, corrosion and magnetic behavior or the environmental issues. Then of course the tolerance. पोर्शन के पेपर में टॉलरेंस आपको पढ़ाया गया होगा। टॉलरेंस एंड फिट्स के नाम से जो पढ़ाया जाता है, गो नॉट गो, कॉन्सेप्ट ऑफ द मास प्रोडक्शन जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी, टॉलरेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Then regarding the loads, so most of the time either the load will be the stationary or the load will be the rotating depending upon the situation. Interfaces, of course, that is press feet, E-ways, splines, bearings. These interfaces are required with the shaft whenever you are going to attach the other attachment or mounting on the shaft. So there will be way on which you are going to put it on the shaft, or when you are going to connect the shaft with other systems, always there will be some requirement. So these interfacing is required. Assembly as well as the stiffness. So here you see the motor is shown. On that motor shaft is there. Then the pulley arrangement is there. On that pulley belt is there. From the belt drive, another machine is there where the speed reduction is there. In that machine, speed reduction is there.
So the input is the through the belt drive shaft, and the gear, small gear is there. Then it is connected with the larger gear parallel on the parallel shaft. Then output is there, then the coupling is there, and then finally it is connected with some machine. So machine is there. So whatsoever may be the speed of the motor, you will be using it is as per your requirement. You will be using it is as per your requirement. Here you can see a shaft is at the motor is there. Similarly, two shafts are there in the gearbox, and one shaft again is there on the coupling, and one shaft is there at the machine. All these shafts, and when you are talking about their design issues, the issues which we have mentioned, they will be discussed. These parameters will be determined from one form to the other form. And see here how the loads are going to come on the shaft. In the three spur gears, you see the shaft will be there. Chain drive system is there. Unbalanced rotor is there. How the shaft will be deflected. With the helical gear with the rack pinion arrangement is there. How the shaft will be affected. The spiral bevel gear is there. So how many shafts and how they are going to work. So these are the different loading mechanism. इस सब जगह हम shaft use करेंगे और अलग अलग किस्म से लोड आएगा. So how to analyze or summarize the loads on the shaft. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको सब लोग बना लें, समझ लें. Let me read the paragraph. The shaft supports rotating parts like gear, pulley, and in turn are themselves supported by bearings resting in the rigid machine housing. The shaft performs the function of transmitting the power from one rotating member to another supported by it or connected to it. Thus, they are subjected to torque due to power transmission and bending moment due to reactions on the reaction members on the members, and that are supported by them. Now here you can see the situation, the general layout. तो शेफ्ट के ऊपर क्योंकि माउंटिंग्स भी होंगी और पावर भी ट्रांसमिट हो रही होगी, तो जो पावर ट्रांसमिट होगी उसकी वजह से टॉर्शनल लोड आएंगे शेफ्ट के ऊपर. Shaft will be subjected by torsional load due to power transmission. Because shaft is used for transmitting the power. मोटर के अंदर जो पावर थी उसको मशीन तक पहुंचाने के लिए shaft बीच में लगी हुई है, तो पावर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं. Most of the time, rotational motion will be there and torsional. Because torque will be there, for getting the rotational motion, you will have to apply the torque. तो जो भी लोड होगा उसके अकॉर्डिंग टॉर्क बढ़ जाएगा. Also, sometime axial load is there on the shaft. अगर shaft vertical position के अंदर लगी हुई है या किसी भी वजह से shaft के ऊपर जल्स आ रहे हैं axial direction में, तो axial load भी shaft के ऊपर आ सकते हैं. और ट्रांसवर्स लोड तो shaft के ऊपर आते ही आते हैं. ट्रांसवर्स लोड जो आते हैं वो तो शेफ्ट का अपना वेट होता है. इसके साथ साथ शेफ्ट के ऊपर जो माउंटिंग्स होती हैं, शेफ्ट के ऊपर जो माउंटिंग्स होंगी उनका अपना लोड होगा. जो भी माउंटिंग शेफ्ट के ऊपर होंगी, इट में बी गियर, it may be pulley, it may be belt, it may be clutch,
whatsoever may be the mountings are there, उन mountings का weight होगा, वो weight downward direction में जाएगा gravity की तरफ, उसकी वजह से bearings जो आप लगाएंगे उनके ऊपर reaction आएगा, ultimately वो load bearing पे चला जाएगा, bearing के थ्रू reaction आएगा उनके ऊपर. So in this way shafts are going to subjected. तो ये load analysis हम इसीलिए shaft diagram बहुत important है. ये आपको अंदाज रहना चाहिए कि किस किस तरह के लोड शाफ्ट के ऊपर आते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर. देखिए यहां भी एक्शियल लोड कैसे आएगा. अगर इस तरीके का गियर लगा हुआ है तो अब इस पोजीशन में शाफ्ट के ऊपर कितने लोड आ रहे हैं आप देखिए. एक तो ये एक्शियल डायरेक्शन में एक्चुअल फोर्स जो है वो टी है, एफटी. एफटी जो है ये आपका है और इसके दो कंपोनेंट इन्होंने निकाले, एक एक्शियल कंपोनेंट है और एक रेडियल कंपोनेंट. So axial component will act along the shaft and radial component as a transverse load. So shaft के ऊपर एक transverse load आएगा, एक axial load आएगा practical situation के अंदर. शहजाद अहमद, शहजाद क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? शुभम श्रीवास्तवा, यस सर. शुभम श्रीवास्तव आपने दो जगह से लॉगिन कर रखा है. सर ये सर एक्चुअली साउंड का इशू है सर, इसलिए मोबाइल और लैपटॉप दोनों से कर रखा है. हाँ तो इसीलिए ये जो इको जो आ रही है इसी वजह से आ रही है. बात आपसे होनी चाहिए. आप बंद करिए अपना, आप बंद कीजिए अपना. कौन बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शाफ्ट एंड द एक्सिल? क्या फर्क होता है? सर एक्सेल रोटेट नहीं करता है सर, शाफ्ट रोटेट करता है सर. वो स्टेशनरी रहता है, उस पे जो एक्सेल के एंड पे रहता है वो रोटेट करता है. दोनों तरह के एक्सेल होते हैं. कुछ एक्सेल रोटेट करते हैं, कुछ स्टेशनरी रहते हैं. एलिमेंट लाइक पुली, गियर, स्प्रॉकेट, फ्लाई व्हील्स, कीज प्रोवाइड अ पॉजिटिव मींस of transmitting the torque between the shaft and the hub of the mating element. Positive means there is no slippage. अगर आप की लगा देंगे तो स्लिपेज जीरो हो जाएगा. प्रेस फिट के अंदर स्लिपेज के चांसेस होते हैं. यू कांट से द पॉजिटिव ड्राइव, बट की के केस में पॉजिटिव ड्राइव ही बनेगी. वो slot is machined in the shaft or in the hub or in the both to accommodate the key is called the keyway. कीवे स्लॉट होता है जो कि शाफ्ट और हब दोनों के अंदर बना दिया जाता है और की उसके अंदर इंसर्ट कर दी जाती है. Yes, of course, the keyway reduces the strength of the shaft as it results in the stress concentration. But there is no way out. आपको मजबूरी है की यूज करनी है. There are the negative issues of the keys, but you don't have the other way around. Keys are made of the ductile material. Commonly used material for the key are hardened tempered steel of the grade C 30, 35, 40, depending upon the what is the alloy. Generally, we use the hard and tough alloy.
हार्ड एंड टफ बोथ, हार्डनेस भी होनी चाहिए, टफनेस भी होनी चाहिए उसके विद अ फैक्टर of safety 3 to 4 is generally taken. You can see here the keyway, ये वो shaft है और फिर इसके बाद कीवे है, की है और फिर गियर का हब है. So part of the key will be in the shaft and part of the key will be in the hub. These are some other type of the key. Most of the key that is plain key होती हैं. However, the Woodruff key or the rounded, these are the keys have some specific and special applications, of course, to reduce the stress concentration. Plain key के केस में maximum stress concentration होता है और चीप सबसे वही पड़ती है, कॉस्टली दूसरी कीज जो है कॉस्टली पड़ती है मगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन रिड्यूस होता है. तो यू विल हैव टू सी व्हिच व्हाट इज द डिजाइन, व्हाट टाइप ऑफ द डिजाइन इज देयर एंड व्हाट टाइप ऑफ द की यू कैन सेलेक्ट. आप देख लीजिएगा. प्लेन की आप बेसिकली देखिए, वुडरफ की भी होती है, लीव दिस की, वुडरफ की, गिव हेड की भी हल्का सा देख लीजिएगा. बट दिस इज आल्सो वी आर नॉट गोइंग फॉर द डिजाइन द गिव हेड की. एंड जस्ट स्प्लाइंस, आपने स्प्लाइंस देखे होंगे. नंबर ऑफ द कीज आर मेड ऑन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द शाफ्ट आर कॉल्ड द स्प्लाइन. कीवेज are provided on the hub only. These are used for the high torque transmission. Example, automobile transmission. Splines are also permit the axial movement. Depending upon the requirement, 2, 4, 6, 8 जितने भी वो स्प्लाइंस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और हब को उसके ऊपर इंसर्ट कर दिया जाता है. Now regarding the stress on the key that we will be discussing in the next class. अभी आपने बेसिक आपसे डिस्कस कर दिया है, इसको आप जाके पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोड एनालिसिस की बात करेंगे कीज के ऊपर और आल्सो ऑन द शाफ्ट के ऊपर लोडिंग किस तरीके से हो रही है, स्ट्रेस किस तरह से आ रहा है. सर हाँ भाई. सर ये आरएस खुरमी की मशीन डिजाइन काम देगा या सिंगले का मशीन डिजाइन काम देगा? अभी शाफ्ट के केस में दोनों बहुत अलग है सर. देखो आरएस खुरमी तो आपसे कहेंगे नहीं पाने के लिए. अच्छा, और सिंगले की सही रहेगी? सिंगले की बुक है. आरएस खुरमी आपके लायक नहीं है. वो थर्ड ईयर में थी और आप शिगले के लायक नहीं हो. काहे सर? वो हार्ड ज्यादा है. हाँ, अगर शिगले आपको पढ़नी है तो बहुत ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा. अच्छा, लिया तो 8-9 तो की पड़ गई सर, लेकिन अगर थर्ड टाइम भी आप कर रहे हो जहाँ पे आप 1 घंटे 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हो तो उस टाइम शिगले आप नहीं समझ पाओगे. अच्छा, शिगले समझने के लिए रोज आप कम से कम 3 घंटे मशीन डिजाइन पढ़ो, तब शिगले समझ में आएगी. इसलिए इन दोनों के बीच में किताब है जिसमें भंडारी की तो है मेरे पास. बस भंडारी से पढ़ो, काफी है. क्या जरूरत है? भंडारी मिलता नहीं है ना सर, पूरा सिलेबस इससे कवर हो रहा है सर. शिगले से ज्यादा कवर हो रहा है, भंडारी में ज्यादा नहीं मिल रहा. आप ज्यादा चक्कर में बताओ, जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से पढ़ो. ओके सर. जो क्लास में पढ़ा देते हैं टॉपिक, वही टॉपिक नोट कर लो, वही पढ़ो, जहां से पढ़ लो. मगर खुरमी में चीजें गलत सलत लिखी हुई हैं. ठीक है सर. खुरमी में चीजें, शिगले में चीजें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं मगर उसके अंदर रेफरेंस टाइम ज्यादा चाहिए होता है. हाँ, थोड़ा हार्ड है सर, देखा था. उसको आप इतना टाइम दे नहीं पाओगे. भंडारी से पढ़ो और किताबें बहुत सारी, भंडारी पढ़ लो, काफी है.
ठीक है तो ओके सर, थैंक यू सर। अटेंडेंस ले ली जाए आप लोगों की। यस प्लीज अटेंड योर कॉल। आमिर खान